ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો। આજે આપણે ધોરણ 8માં હિન્દી વિષયમાં જોઈએ તો કાવ્ય 4 ઉઠો ધરા કે અમોર સપૂતો। ધરા એટલે કે ધરતી। કવિ છે દ્વારિકા પ્રસાદ માહેશ્વરી। એમનો જન્મ થયો છે ડિસેમ્બર 1916માં રોહતા, આગ્રા, उत्तर प्रदेश में। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़ियों को। चंदा मामा आ पुनः नया निर्माण करो माँ। यह वसंत ऋतु हम सब सुमन एक उपवन के उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ है। प्रसिद्ध काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया है। એટલે કે જે દેશના નાગરિક છે, જે દેશના આવતીકાલનું ભવિષ્ય છે, એ લોકોને પાઠ મળે, એ લોકોને બોધ મળે, સંદેશ મળે, એના હેતુથી આ કવિએ કે પ્રકૃતિના તત્વોને ઉપમા આપીને જ્ઞાન આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો પુનઃ નયા નિર્માણ કરો। એટલે કે ધરા એટલે કે ધરતી, હે इस धरती के सपूतो तुम उठो और फिर से कुछ नया करो, कुछ नया निर्माण करो। हर मनुष्य के जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। એટલે કે हर मनुष्य के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति और प्राण भर दो। એટલે કે એમ ધરતીના અમર સપૂતો તમે ઉઠો, ફરીથી કંઈક નિર્માણ કરો અને દરેકના જીવનમાં, દરેક મનુષ્યના જીવનમાં કંઈક નવી સ્ફૂર્તિ આવે, કંઈક નવું ચેતના આવે, એવું કંઈક તમે કરો। નઈ પ્રાતઃ નઈ બાત હે। પ્રાતઃ એટલે કે સવાર, એટલે કે નવો સવાર છે, નવી સવાર છે અને નવી વાત છે। નઈ કિરણ હે જ્યોતિ નઈ, કિરણ પણ નવી છે અને જ્યોતિ પણ નવી છે। નઈ ઉમંગે નઈ તરંગે નઈ આસ હે સાસ નઈ। એટલે કે આપણામાં કેવું છે તો કે નવી ઉમંગ છે, નવી તરંગો છે, આસ એટલે કે આશા છે, નવી નવી આશાઓ છે। સાસ નહીં એટલે કે સાસ બી નહીં હે। એટલે કે આપણા જીવનમાં જે સવાર આવે છે નવી છે, નવી વાત છે, નવા કિરણો છે, નવી જ્યોતિ છે, નવો આનંદ, ઉમંગ, આશા અને શ્વાસ પણ નવો છે। યુગ યુગ કે મુરજે સપનોं में नई नई मुस्कान भरो। એટલે કે યુગ એટલે યુગો યુગથી જે ફૂલો મુરઝાઈ ગયેલા છે એમાં તમે નવી મુસ્કાન ભરો, એટલે કે તમે એમાં નવું હાસ્ય ભરો, ચેતના ભરો। ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો પુનઃ નયા નિર્માણ કરો। એટલે કે તમે હે ધરતીના સપૂતો તમે ઉઠો અને કંઈક નવું કાર્ય કરો। डाल डाल पर बैठ विहंग कुछ नए स्वरों में गाते। એટલે કે ડાળી ડાળી ઉપર બેઠેલા જે પક્ષીઓ છે એ નવા નવા સ્વરોમાં, અલગ અલગ અવાજમાં ગીતો ગાય છે। ગુનગુન ગુનગુન કરતે ભંવરે મસ્ત ઉધર મંડરાતે। એટલે કે જે ગુનગુન કરતા ભમરા છે એ શું કરતા હશે તો કે પોતાનું ગુંજન ચાલુ રાખીને મસ્ત થઈને ફરતા હોય છે। નવયુગ કી નૂતન વીણા મેં નયા રાગ નવ ગાન ભરો। એટલે કે નવા યુગની, નવયુગ એટલે કે નવા જમાનાની આ નવી વીણામાં તમે નવો રાગ ભરો અને નવું ગીત ગાઓ, નવું ગાન ભરો। ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો પુનઃ નયા નિર્માણ કરો। એટલે કે તમે હે ધરતીના પુત્રો તમે ઉઠો, જાગો અને કંઈક એવું કાર્ય કરો કે જેનાથી વિકાસ થાય। કલી કલી ખીલ રહી ઇધર વહ ફૂલ ફૂલ મુસ્કાયા હૈ। એટલે કે આ બાજુ શું છે તો કે કળીઓ ખીલેલી છે, કળી કળી ખીલી ગઈ છે અને એક એક ફૂલ હસે છે। તો આગળ જોઈએ તો ધરતી માં की आज हो रही नई सुनहरी काया है। એટલે કે આજે ધરતીમાંની કાયા એટલે કે શરીર કેવું બની ગયું છે તો કે સુનહેરી એટલે કે સોના જેવું, સોનું। નૂતન મંગલમય ધ્વનિઓ સે ગુંજિત જગ ઉદ્યાન કરો। એટલે કે નવા ગીતો ગાય, નૂતન એટલે કે સારા, મંગળકારી, એમ કે
અવાજો, ધ્વનિ એટલે કે અવાજોથી ગુંજિત જગ ઉદ્યાન કરો, કે બગીચા રૂપી જે આપણું જગત રૂપી જે બગીચો છે એમાં શું કરીએ આપણે, તો કે નૂતન મંગલ ધ્વનિઓથી એને ભરી દઈએ. ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો પુનઃ નયા નિર્માણ કરો. सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुमसे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है. सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. એટલે કે हे सरस्वती, सरस्वती का पावन मंदिर है. किसे पावन मंदिर कहते हैं, तो कि विद्यालय, स्कूल को, शाला को. तो ये पावन मंदिर में शुभ संपत्ति तुम्हारी है, એટલે કે वह सारी शुभ संपत्ति आपकी है. तुमसे है हर बालक इस मंदिर का रक्षक और पुजारी है. એટલે કે તમે છો એટલે જ આ બાળકો જે છે, વિદ્યાર્થીઓ છે એ આ મંદિરના પૂજારી છે અને રક્ષક પણ છે. સચત દીપક જલા જ્ઞાન કે એટલે કે तुम ज्ञान के सैकड़ों, सचत એટલે કે सैकड़ों दीपक जलाकर नया युग का आह्वान करो. इस तरह के हे अमोर सपूतो तुम उठो और फिर से नया निर्माण करो. એટલે કે તમે જ્ઞાનના 100 દીપક પ્રગટાવી નવા યુગનું આહ્વાન કરો. આ ધરતીના અમર સપૂતો તમે ઉઠો અને ફરીથી નવા યુગનું નિર્માણ કરો, કંઈક નવું નિર્માણ કરો. હવે શબ્દાર્થમાં જોઈએ આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો નિર્માણ એટલે કે બનાના, ગુંજિત એટલે કે ભૌરે કે ગુંજાર से युक्त, प्राय એટલે કે અક્ષર, ઉદ્યાન એટલે કે બાગ, પુનઃ એટલે કે ફિર, दोबारा, આહવાન એટલે કે લલકાર, ચુનૌતી, સ્ફૂર્તિ એટલે કે ઉત્સાહ. અભ્યાસમાં જોઈએ તો આશય સ્પષ્ટ કીજીએ. આશય એટલે કે હેતુ, કે આપણને શું કહેવા માગે છે. તો युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो. તો એમાં આપણે એનો અર્થ શું થાય, તો કે જે ફૂલો વિલાઈ ગયા છે તેમાં તમે નવી નવી મુસ્કાન ભરો. ધરતીના હે અમર સપૂતો, ઉઠો અને ફરીથી તમે નવું નિર્માણ કરો. ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો પુનઃ નયા નિર્માણ કરો. એટલે કે તમે ઉઠો અને ફરીથી કંઈક એવું કાર્ય કરો તો જેથી નવું કંઈક નિર્માણ થાય. कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है. तो कवि ने देश के सपूतों को फिर से कुछ नया निर्माण करने के लिए एवं मनुष्य के जीवन में नई स्फूर्ति और प्राण भरने के लिए कहा है. जो पुष्प मुरझाने लगे हैं उसमें नई मुस्कान देने और नूतन वीणा में नया राग और नया गान भरने की बात कवि ने की है. त्रिजु, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है, उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हो. तो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी होती है बालकों, तो भूमि, वन, झील, नदी, पशु पक्षी, ऐतिहासिक इमारतों और किले आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है. हमें इन सब की रक्षा करनी चाहिए और वन्य जीवों का शिकार नहीं करना चाहिए. तालाब और नदियों का जल भी स्वच्छ रखना चाहिए. वृक्षों का भी नाश नहीं करना चाहिए हमें. और स्वाध्याय में जो विद्यार्थी मित्रों, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं. तो कवि माहेश्वरी जी चाहते हैं कि धरा के अमर सपूतों जगत का नया निर्माण करे और मनुष्य जीवन में फिर से नई स्फूर्ति और प्राण भरे, और जो पुष्प मुरझा गए हैं उसमें फिर से मुस्कान भरे, और नवयुग के निर्माण के लिए नूतन वीणा में नया राग और नया गान भी भरे, और नूतन मंगलमय ध्वनियों से हमारा विद्यालय गुंजित करे और 100 दीपक जलाकर नए युग का आह्वान करे, लेके ललकार करे. कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं. तो जो पुष्प मुरझा गए हैं उन पुष्पों में कवि नई मुस्कान देखना चाहते हैं.
देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहोगे? तो देश के नवनिर्माण के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जीवन में स्फूर्ति लाना चाहिए और नई सोच, नई तरंगे, नई आस, नई सांस लेकर हर दिन ऐसे हम सुबह होनी चाहिए। ऐसी हमारी धरती पर जो पुष्प निराश होकर मुरझा गए इसमें हम नई मुस्कान भरना चाहूँगा और हमारे देश को नवनिर्माण के लिए इस तरह को हरियाली बनाकर मैं उसे नई सुनहरी काया देना चाहता हूँ। मैं प्रकृति का रक्षक और पुजारी भी बनना चाहता हूँ। इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो मेरे इस कविता में अपने जीवन में नई स्फूर्ति और नए प्राण भरना चाहूँगा। मैं अपने जीवन में फूलों की तरह नई मुस्कान भरना चाहूँगा। मैं सभी जगह ज्ञान का दीपक जलाकर नए युग का आह्वान करना चाहूँगा। हाँ, प्रश्न 2 જોઈએ આપણે। दिए गए काव्यों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी से, डटे रहो तुम अपने पथ पर कठिनाई तूफानों में, डिगो न अपने पथ से तुम तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभके तारे, अटल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने पे, मिली सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में, जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। એટલે કે આ કાવ્યમાંથી આપણે જે પ્રશ્નો આપેલા છે નીચે એના જવાબ લખવાના છે। हिमालय हमें क्या संदेश देता है? तो हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हमें कभी आंधी तूफानों से डरना नहीं चाहिए। कठिनाइयाँ चाहे जितनी भी आई हमारे जीवन में तो हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने की सतत कोशिश करनी चाहिए। मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? मुसीबत हमें आने पर हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। हमें मुसीबत से हारकर अपने पथ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? तो कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा इसलिए कहा है कि जितनी बाधाएं आई है उन सबसे वह लड़ता रहा है। इस काव्य का भावार्थ लिखिए। तो भावार्थ ये है कि हमें कभी आंधी तूफान या घटनाओं से डरना नहीं चाहिए, उन सभी का हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। हम अपने कार्य में तभी सफल हो सकते हैं जब इन सभी समस्याओं का मुकाबला करें। इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। तो दूसरा शीर्षक क्या दे सकते हैं? तो हिमालय का संदेश या फिर निडर हिमालय, सबसे बड़ा हिमालय। तमे जो जे तमने योग्य शीर्षक लागे ते तमे लखी सको। चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ है। फूल, तितली, बादल, वृक्ष और बारिश। એટલે કે આ શબ્દનો ઉપયોગ થઈ જવો જોઈએ એવા વાક્ય આપણે લખવાના, એવી કવિતા લખવાની છે। हुई बारिश बहुत ही आज, भीगा में बादलों के साथ छिक छिक वृक्ष हिलाऊं, तितली को मैं वहाँ से भगाओ, फूल हुआ मुझ पर नाराज, सूरज निकला देखने आज, सूरज दादा छिक रुकवा दे वरना यहाँ से चले जाओ। अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। माँ खादी की चादर दे दो मैं गांधी बन जाऊँगा। એટલે કે આ કાવ્ય આપણે આમાં પૂરું કરવાનું છે। एक रोटी एक लंगोटी राम नाम गुनगाऊँगा, माँ जो मुझको विद्वान बना दे काम सभी के आऊँगा, मैं अपनी बाहों के बल पर अपनी राह बनाऊँगा, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊँगा। तो विद्यार्थी मित्रों આપણે અહીંયા આ કાવ્ય કમ્પ્લીટ થાય છે। હવે આપણે નવા કાવ્ય સાથે આપણે ફરી મળીશું। ત્યાં સુધી તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે કાવ્ય શબ્દાર્થ અભ્યાસ સ્વાધ્યાય લખીને કમ્પ્લીટ રાખજો અને પૂરક પરીક્ષાની તૈયારી પણ સાથે સાથે ચાલુ રાખજો તમે। તો આપણે ફરી નવા લેક્ચરમાં મળીશું।